जोश जज्बा जुनून मैच नंबर 91 युवा कबड्डी सीरीज 2022 समर एडिशन और चलते हैं इस बड़े मुकाबले की तरफ। एक तरफ पेरियार पैंथर्स जो कि लाजवाब फॉर्म है और लगातार यहां पर अपनी लूजिंग स्ट्रीक से अब थोड़ा सा बेहतर करना चाहती है मराठा मार्वल्स। तो चलिए एक और बड़ा मुकाबला नून मुकाबले की अगर बात करते हैं, संडे फंडे बनने जा रहा है। पेरियार पैंथर्स एक बहुत अच्छी फॉर्म के साथ यहां पर दूसरे पायदान पर मौजूद है। 11 मुकाबले खेले, 9 मुकाबले जीते, 2 मुकाबले हारे जरूर है, परंतु ये चाहते हैं और जानते हैं कि इस प्रकार से मुकाबले में जीत प्राप्त करते हैं। और मराठा मार्वल्स बॉटम ऑफ द टेबल, महज एक मुकाबला जीता है। बूस्टर राउंड 10 मुकाबले यहां पर निश्चित तौर पर इनके लिए बेहतर नहीं गए। और बूस्टर राउंड की अगर हम डे नंबर 12 के फिक्सचर्स की बात करते हैं तो अब पहला ये मुकाबला जब हुआ था तो टडोबा टाइगर्स ने जीता है, 17 पॉइंट से रावली हेरोज को हराया है। दूसरा मुकाबला मराठा मार्वल्स वर्सेस पेरियार पैंथर्स और शाम को खेला जाएगा मुकाबला पंचाला प्राइड वर्सेस हम्पी हीरोज। और आज के दिन का अंतिम मुकाबला होगा काजीरंगा राइनोज वर्सेस मुरथल मैग्नेट्स के मध्य। पर चलिए यहां पर समय है हमारी दोनों टीम्स को मैच पर आमंत्रित करने का और सर्वप्रथम हम आमंत्रित करने जा रहे हैं हमारी टीम मराठा मार्वल्स। और चलिए अब समय है हमारी पैंथर्स से परिपूर्ण टीम को आमंत्रित करने का मैच पर। तो चलिए बुला लेते हैं पेरियार पैंथर्स। करते हैं आप सभी का मराठा मार्वल्स के स्टार्टिंग 7 के साथ बदलाव। आज यहाँ पर आपको कुछ नजर आएंगे, धर्मवीर सिंह वहां पर आपको नजर आएंगे कि शायद अपनी टीम को लीड करें। राहुल चौधरी की यहाँ पर जो कवर कॉम्बिनेशन की जोड़ी है उसे आप बेहतर प्रदर्शन देखना चाहेंगे। रमेश चौधरी, साहिल चांदू आज मौजूद हैं, विनोद चौधरी, दीपक चौधरी, यानी कि आज इस टीम में बदलाव है और आज आप एक विनिंग कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं मराठा मार्वल से और कॉम्बिनेशन हम बनाना चाहते हैं। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ नवीन एक बार फिर से मौजूद होगी कमेंट्री में। नवीन, आपका स्वागत है। Thank you, Harshit. I hope the rain has been reduced in Jaipur, but the injury worries for the Periyar Panthers hasn't been reduced as they will be once again coming up with a different combination as we look at the Maratha Marvels where there are lot of force changes and Dharamveer Singh will be leading the Maratha Marvels, but the Periyar Panthers coming up with a few injury concerns. Of course, the Sultan of Surprises, Ankit, also getting injured. So it is Rinku who will be the captain for the first time for the Periyar Panthers. Ashish Malik and Ankit Surinder also find their way in the corners, and Nitin Jaglan will be supporting Rinku, and of course Ashish Umed and Anish will be there for the covers. Let's see who's going to be the men to watch out for. जी और अगर हम मैन टू वॉच आउट फॉर की बात करें तो जिस तौर पर आपने दोनों ही टीम्स की यहाँ पर स्टार्टिंग की बात की, मैं एक बार फिर से साहिल चांदू से यहाँ पर काफी उम्मीदें करते हैं। 241 रेड पॉइंट्स 116, ये और अच्छा कर सकते हैं। 4 सुपर 10 इनके पास है। रेड स्ट्राइक रेट को और ज्यादा बेहतर निश्चित तौर पर करना चाहेंगे। 38.13 की जो इनकी रेड स्ट्राइक रेट है, आज हम चाहेंगे ये बेहतर प्रदर्शन करें और आपसे जानेंगे कि पेरियार पैंथर्स के लिए आज यहाँ पर कौन आपको नजर आएगा प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। Rinku is doing really well, and Sahil Jandu of course has to make sure that he lives up to his expectations. Rinku's strike rate is 63.07, so that shows that now he is somewhere very capable of taking up that lead role of the lead raiders responsibility. It's very, very important for Rinku to do that. 195 raids, lot of raids, but 123 raid points as well, converted them with a 63% conversion. Nice for them. And then also Rinku, I guess, had won the toss. Yeah, he had won the toss, and then he's elected to take the court as well. So first time captain getting lucky by winning the toss, and Dharamveer Singh will go back and manage the defenses as we look at the performances of the team, Harshit. But Maratha Marvels somewhere are coming back into this team, or rather into this game
with I think 6 consecutive losses. यस, कंसेक्यूटिव लॉसेस की यहाँ पर बात करें, परंतु चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉस। उन्होंने 14 मुकाबले हारे हैं, 4 मुकाबला जीते हैं और बूस्टर राउंड में उनका उस प्रकार से प्रदर्शन नजर आया ही नहीं है जो आप मराठा मार्वल्स को देखना चाहते थे, परंतु पेरियार पैंथर्स जरूर नजर आई है नवीन। Yeah, and Periyar Panthers are striking back, and without Ashish Narwal, they have won a match. Today they'll have to win without Ankit and Naveen Sharma. So this again is a very, very big challenge for Ankit Surinder and Ashish Malik, and of course Ujjwal to be supporting in for Rinku. So Nitin Jaglan of course has played well. So let's see how this combination settles in. But before we also go in for the match, we'll go in for the countdown first. Match number 91 live here from Sanskar School, Jaipur, where we have the voice of the event, also FM Tadka, who says Apni Suno always, and now it is time that Maratha Marvel say please Apni Suno ek bar aur chalo raid par. And Ramesh Chaudhary there comes in to raid for the first time. A lot of Rahul Chaudharys there, the team filled with Chaudharys, and they'll have to show the real power of the Chaudharys today. जी हाँ, इसकी आवश्यकता हो गया आज मराठा मार्वल्स के लिए। और मुझे ये देखकर अच्छा लग रहा है नवीन, अगर आपने आपकी लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन पर देखा और अगर आपने अपनी शीट्स में भी देखा तो आज वहां पर आपको सब्स्टिट्यूट्स में आशीष नरवाल और नवीन दोनों का नाम वहां पर आपको नजर आएगा। और आशीष नरवाल को हमने देखा तो उन्होंने, उनके चेहरे पर बैंडेजेस नहीं थे, उनके सर बिल्कुल स्थिर था। और चलिए यहाँ पर रिंकू बतौर कप्तान, बतौर लीड रेडर आज अपनी टीम के लिए एक बार फिर से बहुत अच्छी शुरुआत। धर्मवीर बतौर कप्तान, कैप्टन वर्सेस कैप्टन, ये हॉटेस्ट ड्यूल आप जरूर कह सकते हैं। 1-on-1 अच्छा कॉन्टेस्ट होगा इन दोनों के विरुद्ध, परंतु आसानी के साथ यहाँ पर एक पॉइंट लेकर गए रिंकू। Yeah, you were just mentioning about Ashish Narwal as Ramesh Chaudhary raids in. It's nice to see Periyar Panthers find new heroes every single time, and that was a very, very weak attempt by Ankit Surinder, and for a right corner to attempt such a weak tackle. See, no intention in the dash, no confirmation in the block, and then very, very easy point given away for Maratha Marvels. And if Maratha Marvels find it difficult to win this match against the fully changed or rather completely benched side of Periyar Panthers, I do not know what else will Maratha Marvels feel comfortable with. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि आज कम से कम ये मुकाबला मराठा मार्वल्स देखना चाहेगी कि अपनी शक्तियों की परिपूर्ण खेले। देखिए गोपाल सिंह को स्टार्टिंग से मौका नहीं मिला, जरूर वहाँ पर सब्स्टिट्यूट में मौजूद है, अच्छा कर रहे थे, वो काफ़ी इंप्रेस भी करते हुए नजर आए थे। परंतु कोच यही चाहते हैं कि अगर जीत में वहाँ पर कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है आपका प्रदर्शन, तो आप लगातार वहाँ पर बाकी जो सभी खिलाड़ी हैं उन्हें मौका देना चाहते हैं। इसलिए आज रमेश चौधरी को मौका मिला है और उस मौके को बुनाना बड़ा आवश्यक रहेगा रमेश चौधरी के लिए। अभी तो चलिए वहाँ पर एम्प्टी रेड के साथ संतुष्ट होंगे। और अब नितिन जागलान, He has done well, Harshit. No doubt about Nitin Jaglan, because even when Ashish Narwal was raiding so efficiently for Periyar Panthers, he was there in the substitution list. He came in as a do-or-die raid specialist on a couple of occasions. He has saved his team. So he's been a good find for Mohit, the coach of Periyar Panthers. But where I really feel this team has come up to put up a big fight is after winning consecutively in the booster round, and when there were few injury worries for Ashish Narwal, and without Ashish Narwal, if this team is doing well, so going forward in the challenger round, the whole team, the whole squad, you cannot be just saying the playing 11 or the support staff or anybody, the whole squad will be really confident of winning the maiden trophy of Yuva Kabaddi Series. जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनकी पूरी स्क्वाड तैयार होगी, जिस तरह से आपने बताया कि उनके सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी में भी वो कॉन्फिडेंस होगा। लगातार उनकी मैच प्रैक्टिस वहाँ पर उन्हें मिल चुकी है, लगातार उन्हें खेलने का मौका मिला है। और हम नितिन जागलान की यहाँ पर बात कर रहे थे, परंतु रिंकी ने यहाँ पर एक और बार फिर से बहुत अच्छी तरह से और बड़ी आसानी के साथ वहाँ पर देख लिया था और उसके बाद टर्न किया, बड़ी आसानी के साथ मिड लाइन पर जाकर पॉइंट लिया। दीपक चौधरी, जिन्होंने टोटल अभी तक 11 टैकल पॉइंट्स लिए हैं, अच्छी तरह से खेल का प्रदर्शन कर रहे थे। इस बार जरूर थोड़ा एडवांस जाकर टैकल करने का प्रयास था, जिसके चलते एक आसान सा पॉइंट रिंकू को।
Yeah, see, with the advanced tackle, he also was confused whether to go with the chain or to go alone. And now that's a strong ankle hold. That is the first attempt from Ashish Malik in the morning today, and then he's been successful in the left corner. The left corner has been a spot of worry there for the Periyar Panthers because they have tried more than two defenders. Maybe Akshay Kumar, he was also kind of not very strong near that left corner. And look at what is happening. Look at what is happening. Sahil Jandu, I do not remember that he is even raided even for a single raid, and he's been substituted. That's what I said. The dressing room atmosphere is so important for a player to perform. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि साहिल चंदू स्टार्टिंग 7 में अगर वहां रखना था, दीपेश ने जरूर आते ही वहां पर एक अच्छा टैकल पॉइंट दिलाया। दीपेश की काबिलियत पर किसी को कोई शक नहीं है, परंतु साहिल चंदू को जिस तरह से एक बार फिर से सब्स्टिट्यूट कराया गया, उन्होंने रेड नहीं की कि अनकंफर्टेबल अगर फील कर रहे हैं तो क्यों नहीं स्टार्टिंग 7 में जगह थी, ये जरूर कुछ प्रश्न रहेंगे। अनुज यादव को मौका मिला अंदर आने का, ये अच्छे संकेत हैं, अच्छे रेडर हैं, कोई भी वहां पर परंतु यहाँ पर आपको नजर आएंगे जो सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर्स की हम बात करते हैं, नवीन शर्मा काफी मुकाबलों के बाद अब आपको नजर आएंगे और सीधा अपनी प्रॉपर पोजीशन पर राइट कॉर्नर पर अंकित सुरेंद्र को शायद बाहर किया गया है। That's a big blow. Right, you take off Sahil Jandu, the main raider, and then in the opposition, a big defender comes up to his proper place and takes up that right corner. And what are we seeing? Naveen. What are we seeing? There we go. Harshit, I am not believing my eyes. You just said no bandages. You said, okay, Ashish Narwal is looking nice and fine. And now, somewhere Mohit says, ja beta, thoda khel ke aaja. Look at that. Yes, जिसका इंतजार था, बिगेस्ट पैंथर ऑफ युवा कबड्डी सीरीज। और देखिए जिस तरह से यहाँ पर प्यार मिला है इस खिलाड़ी को, जिस तरह से सभी खिलाड़ियों से प्यार मिला है, जिस तरह से सभी दर्शकों से प्यार मिला है, अब आपको नजर आ रहे हैं वो। और देखिए दो स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी एक साथ वापसी कर रहे हैं, नवीन शर्मा और आशीष नरवाल। बिल्कुल आपने सही कहा कि मुझे भी बिल्कुल जो मेरे पास में पानी पड़ा था, मैंने थोड़ा सी आंखें धोई और फिर चेक किया कि थोड़ा सा क्या पता थोड़ा सा नींद का असर हो, परंतु बिल्कुल सही आपने कहा कि हमने स्क्रीन पर देखा है इस खिलाड़ी को रेड करते हुए भी देख रहे हैं। Now, I think after 3 matches that Ashish Narwal is making a comeback. It's a big moment for him, and he does not look that he was out for 3 matches. He's looking as if, there we go, running hand touch. That's the first point in this game. He is looking as if he's playing even while he was resting. Look at that speed and look at that hand stretch. Go all across towards the right corner. The defender could not do much. It's all brilliance for Ashish Narwal. देखिए नवीन, हमने ये तो सुना था कि इंजरी से रिकवर होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, परंतु कितनी आसानी के साथ यहाँ पर ऐसा शायद लगा ही नहीं कि कोई इंजरी से यहाँ पर वापसी कर रहे हैं। जिस स्फूर्ति उनमें नजर आई और उन्हें ऐसा लगने ही नहीं दिया पूरी टीम ने। और आशीष मलिक आज अच्छा कर रहे हैं, आशीष मलिक आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिस तरह का प्रदर्शन, वेस्ट होल्ड किया, ब्लैंक हो गए थे एक बार रेडर, और इस तरह से हमने लगातार होते हुए देखा है मराठा मार्वल्स के रेडर को। यहाँ पर एक आसान सा बैक होल्ड आशीष मलिक का। And look at the confidence what Naveen Sharma and Ashish Narwal has given the others. Wow. See, Ashish Malik did not go for such a tackle before that, and just before the midline he goes in, attempts the back hold, gets it comfortably, and another point, running hand touch for Ashish Narwal. I really want to see this. He wears a different kind of a shoe compared to the other players always, Ashish Narwal. If we can, somewhere in any angle, if we can get that close-up of his shoes. Because it's a black shoes which is I guess giving him that extra comfort. Of course he is tall, so I guess his shoe size is of course more than 9 or 10 maybe. Once again ankle hold. That's the first all out for Maratha Marvels. Arshit, keep account of this. I'm sure this is going to be breaking Tadoba Tigers' record of 6 all outs in the game. Strong ankle hold once again from Ashish Malik. Yeah, just talking about his shoes. He wears that black shoes, which is very different from others. I haven't seen this being worn by anybody else, and not just now. He's wearing this right from the beginning. I guess he's very comfortable with such kind of a shoes, and that shoes has been tackled. That shoes which went a little lower and deeper got the bonus.
But then again, the left corner of Maratha Marvels had that easy. Deepak Chaudhary, or I guess there is some other player there in that place. I guess it is Mohar Singh who got the ankle hold. देखिए दीपेश वहां पर मौजूद थे, जिस महज एक खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है, ओ परंतु अब ये खिलाड़ी वापसी कर रहे हैं. नवीन शर्मा बैक टू द युवा कबड्डी सीरीज विद मोर बैंग, मोर जोश, जज्बा एंड जुनून. जिस तरह से सिंगल था होल्ड जरूर था, परंतु जो जकड़न के साथ वो पकड़ लिया जिस अंदाज में, और दीपेश वहां पर मौजूद थे. मैं बात कर रहा था मराठा मार्वल्स के लिए, मुझे महज एक ही खिलाड़ी ने इंप्रेस किया है, वो है दीपेश. जिस तरह से दीपेश का प्रदर्शन है वो शायद निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है. नवीन, Dipesh Kumar put that ankle hold very rightly so from the left corner, and along with the right corner there, he should work in tandem with Vinod Chaudhary. Let's see if that comes across. But I see every time, Harshit, I speak for the team which is lagging behind in the match, just to make sure the match is really exciting and entertaining on everybody, for everybody watching on fan court. But today, Ashish Narwal has made me silent. I can't even think of a strategy now for Maratha Marvels. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि आशीष नरवाल, नवीन शर्मा ने जिस तरह से वापसी की है, परंतु फिर भी अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें यहाँ पर मराठा मार्वल्स के बारे में नवीन, तो जिस तरह से गलतियां दोहराते हुए नजर आए हैं, और देखिए आशीष नरवाल तो कितनी आसानी के साथ, ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा इन्हें करने की आवश्यकता नहीं है. बिल्कुल कह रहे हैं कि इट्स माय कप ऑफ टी, ये मेरा रेगुलर रूटीन है, मैं रोज सुबह उठता हूँ, इस तरह से सबसे पहले स्ट्रेचिंग करता हूँ, फिर पॉइंट्स लाता हूँ, वापस जाता हूँ, खाना खाता हूँ और सो जाता हूँ. And Rahul Chaudhary BN was there in the right cover, who could not take his legs back in time. But see, even to talk strategies, I will want some weaponry, right? And what happens with the dupki like that? You have created some sort of confidence in your team. 2 points in the chain was Naveen Sharma along with Nitin Jaglan, and the chain was not strong enough. Not strong as Ankit and Naveen Sharma. So somewhere the coordination went for a toss, and points there. Very, very important confidence boosting points. Very, very important for Maratha Marvel. So now, if I have to even talk about strategies, whom do I base my strategy on? I can base on Deepesh Kumar, is what he's showing me. Another ankle hold. This is nice. Even if they go down, they have to go down fighting, and they have to go down like the real Marvels. The Marvels in the end game. Even if for the Maratha Marvels, if this is the end game, they'll have to fight it out like Iron Man. जी, और इसी की मैं बात कर रहा था, थोड़ी देर पहले भी हमने यही बात की थी कि महज एक खिलाड़ी मुझे जो नजर आए हैं, देखिए थोड़ा बहुत अनुज यादव ने भी शुरुआत में इंप्रेस किया था, परंतु उसके बाद वो अपनी स्पीड से लगातार परेशान होते हुए नजर आए, और इस खिलाड़ी ने भी बहुत इंप्रेस किया है. अनीश इससे पहले 31 टैकल पॉइंट्स ले चुके हैं, 2 हाई फाई बना चुके हैं. ये खिलाड़ी भी डिफेंडर्स, पेरियार पैंथर्स शुरुआत में अपने कवर डिफेंडर से थोड़ा सा वीक नजर आ रही थी, परंतु जब से अनीश आए ये बहुत अच्छा नजर आया है. और अब फिर से दीपेश की अगर हम चर्चा आगे बढ़ाएं, तो दीपेश के साथ साथ कप्तान जो मराठा मार्वल्स के अजय शर्मा, सर्वाइवल राउंड में हो या फिर बूस्टर राउंड के शुरुआती मुकाबले में हो, उन्होंने भी बहुत अच्छे टैकल्स किए थे, परंतु वो अपनी गलतियों को लगातार दोहरा रहे थे, लगातार एडवांस टैकल कर रहे थे. अन्यथा कॉर्नर्स की जोड़ी बहुत अच्छी थी, कुछ समय तक लगातार वो तीसरे पायदान पर बेस्ट डिफेंडर में भी मौजूद थे अजय शर्मा, परंतु उसके बाद वो लगातार लैग करते चले गए. नवीन, In the previous game, we were speaking about how this series is a long series. That is another example. Ajay Sharma did well in the initial part of it, and now somewhere the toe touch and then the charge from behind. I guess he's safe. I guess he's very, very safe, and very lucky also there, Ashish Malik, of not getting a touch. Right. So what I was trying to say was Ajay Sharma, who also did well in the first half of the series, beginning of the series was really nice for him, and then he could have continued it like the other players have done, but he could not keep up that momentum. But so this is a long series trying to test everything. The agility, speed, mentality, physical fitness, everything of the players is tested. And when you play such long series, going forward, you will feel very comfortable by playing some franchisee leagues, or even when you play for India in the big Asian games, or South Asian games and all that.
So you will feel comfortable. That is the whole motto of Yuva Kabaddi Series. Of course, the talent is meeting the opportunity, but along with that, they're getting prepared for the tougher world. और जब यहाँ से बिल्कुल आपने जिस तरह से कहा कि हर एक वो टेस्ट लिया जाता है, चाहे वो मेंटली टेस्ट हो, चाहे वो फिजिकल टेस्ट हो, एजिलिटीज का हो, अपनी स्किल्स को आप कितनी तरह से कर सकते हैं। और देखिए इस बात को मैं रिलेट करना चाहूँगा नवीन, जो सोना जब बनता है तो भट्टियों पर कई समय तक वो तपता है, वो गर्माहट उसे सहन करनी होती है और उसके बाद वो सीधा सोना बनकर निकलता है। तो क्या युवा कबड्डी सीरीज एक ऐसी भट्टी है जहां से सभी खिलाड़ी को तपना होगा, गर्मना होगा, परंतु जब आप यहां से निकलेंगे, अच्छा कर निकलेंगे तो आप सीधा सोने के तौर पर निकलेंगे, यानी कि आपकी वैल्यू, आपकी स्किल्स उस स्तर पर पहुंच जाएगी जी, आप जहां पर आप इंटरनेशनली हो या फिर लीग्स में हो, अपने अपनी टीम्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Yeah, you very rightly put across. I think the rain today has helped you, Harshit, very much. You know, I think Bara number is out. That's what the call is for Maratha Marvels, and that is a mistake by Vinod Chaudhary stepping into the end line, not happening, and another touch point also given away. So when it is raining, Harshit is thinking about gold. Okay, that is nice. And let me also put up another golden smearing towards the line that you said. This is KGF, Kabaddi Goldfield. बट इसके रॉकी भाई कौन है? देखिए नवीन, आप good one. I feel everybody is there stealing the gold, and especially this guy, and Ashish Narwala shown he is the bhai of bhais. 2 points there for the biggest panther. और देखिए लगातार जिस तरह से मेंटली कार्य करते हैं, देखिए इनमें वो फिजिकल ताकत है, जिस तरह से एजिलिटीज है, स्किल्स है, परंतु देखिए दीपेश कुमार के जानबूझ के उन्हें पता था एंकल होल्ड में दीपेश माहिर है, तो अपने आप को उनके एंकल से दूर रखा, डू और डायरेक्ट और बड़ी आसानी के साथ पेरियार पैंथर्स एक दफा, और ये दूसरी दफा है, शायद नवीन के ऑल आउट हो जाएगा यहाँ से मराठा मार्वल्स का खेमा। Unbelievable Naveen Sharma. Why should he even come into this match and make this Marvels even suffer more is my question. He could have come against any other team. He could have played against any other team. But Ashish Narwala is struggling. Right. There has been a couple of occasions that he has been tackled and the coach is happy. At least there the defense is coming together and the covers, the combination of the covers working very well. Both the Rahul Chaudhary. The name itself, you ask me who is the the Don, the biggest Don of the Kabaddi Goldfield. Yeah, that's the man. That's the man with the name. I will say it's not Rocky or anybody. It is Rahul Bhai. Rahul Chaudhary is the name because he was the one who put up the Kabaddi's face onto the world map, and he was the one who took up this wonderful game and being an inspiration to most of them. Of course, nothing taking away from big other giants like Anup Kumar and also Pardeep Narwal, Rohit Kumar. Everybody's done well, but Rahul Chaudhary was that one modern face, one modern hero that was looked up to by everybody, and that's the reason why we have the names also been very correlated to him playing Kabaddi. And another 2-point raid for Nitin Jaglan. जी हाँ, इस बार बहुत ही चपलता के साथ, और आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से बड़े खिलाड़ियों की आपने बात की, और राहुल चौधरी तो सच में अगर आप बात करें कबड्डी का एक ऐसा जाना माना और साथ ही साथ जिन्होंने विश्व पटल पर कबड्डी के परचम लहराया है, जिस तरह से कबड्डी के झंडे को परचम की तरह लहराया है, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ रहा है राहुल चौधरी। जिस तरह से और भी बड़े लीजेंड्स की आपने बात की, तो निश्चित तौर पर ये कबड्डी का खेल ही ऐसा है ना। और देखिए भारत का अपना खेल है और बड़ा जुनून रहता है, और हमारे दर्शक इसे इतना प्यार दे रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये आपके बचपन से रिलेट करता है। बचपन में हर किसी ने यहाँ पर खेला होता है इस गेम को, और नवीन आपने बताया कि आप भी बचपन में बड़ा खेला करते थे, हालांकि आप वहाँ पर सब्स्टिट्यूट में ज़्यादा बैठे रहते थे नवीन, जिस तरह से आपने बताया था। What nonsense! I was a very good right corner defense because it was really important for a tall guy, hefty guy to make sure the defense works well. But now it's a do-or-die raid for the Maratha Marvels. Ankle hold and the kick
is what is very, very important for the Raider in his escaping skills armory, and Ramesh Chaudhary has tried to impress today. Gone in for the reverse ankle hold by Ashish Malik, could not get the reverse, and then goes in straight on the bench. But yeah, just talking about that, Rahul Chaudhary aspect a little more. See, apna Niti ka Khel hai and all that was nice. But somewhere we wanted to modernize this game. And once again, look at the running at it so easily. He just pushes away the defender outside the end line even. And it is a very, very tough place to be in the right flank when Ashish Narwal is in such huge form. And Ashish Narwal just making the right corner look like he did not even exist there. Yeah, just coming back to Rahul Chaudhary. See, we wanted, it's a phase where the Niti ka Khel had to go international. Not just, national, it had to go international. We had that World Cup coming. And we wanted a poster boy. And he was termed as the poster boy of Kabaddi. And we wanted such fan following to happen for Kabaddi. Of course, Padma Shri, Ajay Thakur ji, who won the World Cup for us, was very important. Pardeep Narwal was very important. Captain Anup Kumar and Surender Nada, Mohit Chillar, Manjeet Chillar. My God, these are all very, very big names. But somewhere for the young audience and for the upcoming kids to follow Kabaddi, you wanted a poster boy. You wanted a Virat Kohli of Kabaddi. That's the reason where Rahul Chaudhary's name becomes so very important. As Periyar Panthers lead this by what? 21 points. And the halftime is done. And then, you know what? There is, Arshid, just for fun, what should happen is, in test matches, if you know, there is something called follow-on, right? Yes. In the second half, Maratha Marvels should be, given the option to follow on. यस, बड़ी चपलता के साथ हमने इस वार्तालाप को आरंभ किया और बिल्कुल आप राहुल चौधरी के एस्पेक्ट पर बात कर रहे थे, उससे भी हम उस चर्चाओं को और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाएंगे। थोड़ी सी हाइलाइट्स की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, जिस तरह से यहाँ पर हाइलाइट्स में पूरी कहानी दिख जाएगी आपको। जिस तरह से आज मराठा मार्वल्स यहाँ तक सही था कि ना नवीन थे ना आशीष नरवाल थे, उसके बाद सबसे पहले नवीन आए और उसके बाद आशीष नरवाल आए, उसके बाद से मराठा मार्वल्स की चर्चाएं लगभग समाप्ति की तरफ थी। दिपेश ने जरूर ऐसे मौके बनाए कि चलिए थोड़ी सी चर्चा में एक बार लगातार बने रहेंगे, परंतु लगातार डोमिनेट करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है पेरियार पैंथर्स का खेमा। और फिर से वही पेरियार पैंथर्स जो आपको बूस्टर राउंड में डोमिनेट करते हुए नजर आ रही थी, वो अब फिर से नजर आ रही है एक बार पुनः। Yeah, very much. And the wrong timing for Maratha Marvels of Naveen Sharma and Ashish Narwal coming back on the court. And from the moment they have been on the court, it is all Periyar Panthers, a 21-point lead in the first half. So that shows the story for it. Look at that. Nothing in the tackle points. Nothing at all in the tackle points. But raid points also for Maratha Marvels is nothing. That's the problem. That is the problem. 17 raid points and only 5 to the Maratha Marvels. And it is a huge one. It's a huge one. So a 20-point lead, and we'll come back soon when the second half resumes. So welcome back, guys. Welcome back, everybody. On yeah, go on. मैच नंबर 91 पेरियार पैंथर्स वर्सेस मराठा मार्वल्स। यहाँ पर इससे पहले स्कोर कार्ड की अगर हम बात कर लेते हैं, 30-10 से यहाँ पर आगे है 20 पॉइंट्स की लीड के साथ पेरियार पैंथर्स युवा कबड्डी सीरीज। और अभी तक अगर आपने युवा कबड्डी सीरीज का ऑफिशियल ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और कीजिए उस ऐप को डाउनलोड। वहाँ पर आपको हर एक स्टैट्स मौजूद मिलेगा, मैच का यहाँ पर आपको हाल बयां होता हुआ नजर आएगा, एक पॉइंट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। और हाल बयां करने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल कमेंटेटर मौजूद है, नवीन, आपका स्वागत एक बार फिर से। Even in the frame when we saw the poster boys of Yuva Kabaddi Series, we have Ashim Malik, we have Partik Bhaiya, and we have Ashish Narwal. So the top three, and even in the countdown when we see
the top three poster boys being there. It's very, very important. And look at that effort. Look at that strong ankle hold effort. But Rinku, once again, the backtracking skills, kicking away the defender. Nothing was wrong from Vinod Chaudhary. Nothing at all was wrong. But it was all Rinku's brilliance to make sure that one of the other legs is free and he backtracked himself from the midline. It is talking about Ashim Malik, Periyar Panthers is Ashish Narwal, and of course the big Rhino. So what happens? We need heroes, right? Of course, Kabaddi is a very, very engaging sport. It is a exciting, enthralling sport. Everybody will watch it. But you want heroes to be followed. So those are the posters boys that we started talking about. And Rahul Chaudhary actually started the trend of the poster boys in Kabaddi. And now we have so many names to speak about. So many names to speak about. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा नवीन की जिस तरह से राहुल चौधरी ने वो एक बड़ा रोल अदा किया था। इस बार आशीष नरवाल को जरूर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और हमारे जो स्पेशल गेस्ट और कुछ दर्शक वहाँ पर जो मौजूद है उन्होंने भी बहुत ही अप्रिसिएशन दिया कि क्या बात है, कितने पावरफुल आशीष नरवाल हैं। चलिए, राहुल चौधरी के बारे में हम लगातार वार्तालाप करें तो जो सफर था कबड्डी का, कि अपन जिस तरह से कहा करते थे भारत का अपना मिट्टी का खेल और इंटरनेशनल ले जाने तक जो सफर था उसमें राहुल चौधरी एक तरीके से कबड्डी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नजर आए। चाहे उनके थाईफाई की स्टाइल कह लें, जिस तरह से उन्होंने थाईफाई निकाला, अपनी स्टाइल लेकर आए। आपने बहुत सही कोरिलेट किया उसे विराट कोहली से। विराट कोहली के सिर्फ प्रदर्शन से यहाँ पर यंग वंस उन्हें फॉलो नहीं करते हैं, जिस तरह से उनकी जो स्टाइल्स है, जिस तरह से उनका रुतबा है, वो रुतबा यहाँ पर आपको राहुल चौधरी का नजर आता है। और जिस तरह से उन्होंने एक बहुत ही इंटरनेशनली तौर पर जो फैन फॉलोइंग बनाई है कबड्डी की, वो सच में अद्वितीय है। And speaking about young fans, look at that. Look at the way they enjoy Ashish Narwal's rate. He goes into the left corner, then does not get him. Then he goes towards once again right corner. Then once again he goes back to the left corner and pushes the defender down and says, okay, sorry, I have touched you and I'm coming back. And it's a do-or-die race. After the second half, there is not even a single point for the Maratha Marvels, and Ramesh Chaudhary has got all that responsibility to save his team from the third all-out. And look at Ashish Narwal just trying to tell his cover defenders, do not go for that. And Naveen Sharma has been boxed here by Ramesh Chaudhary's brilliant jump. Naveen Sharma had everything going for the ankle hold, but the only error that he committed was he did not go with both hands. Look at that, he went with one hand. When you go with one hand, you cannot have the raider who is already jumping towards the midline. So somewhere Ramesh Chaudhary saves Maratha Marvels. Now Ashish Narwal will try to clean this up. Harshit. बिल्कुल आशीष नरवाल अब यही चाहेंगे कि चले जो ऑल आउट की तरफ धकेला हुआ है, यहाँ पर मिल जाएगा पॉइंट। कोशिश जरूर करना चाहते थे और आशीष नरवाल की हम बात कर रहे थे कि वो जानते हैं कि कहाँ उन्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे। हम जय भगवान की बात करते हैं कि उन्हें अपर बॉडी से पकड़ना मुश्किल होता है, लोअर बॉडी पर ज्यादा से ज्यादा डिफेंडर्स उनकी तरफ जाते हैं और वैसा ही आशीष नरवाल के साथ है। उन्हें पता था कि मेरे लेग्स पर कहीं ना कहीं अटैक होने वाला है, तो बिल्कुल सही तरह से वहां पर राहुल चौधरी के पकड़ से बचे और बड़ी आसानी के साथ अब फिर से बेड़ा यहां पर उठाना पड़ेगा रमेश चौधरी को। आज अच्छी तरह से पॉइंट लेकर आए दिपेश के अलावा महज से एक ही खिलाड़ी आज भी अच्छा करते हुए नजर आए, वो रमेश है। इस बार भी जरूर अच्छा है, परंतु नवीन आपकी बात नवीन ने सुन ली है, दोनों हाथों से गए हैं इस बार। Exactly, and also the jump was not towards the midline. Somewhere it was a very, very valiant attempt, and there he gave the angle to the support to come in and stop him. So if it would have been on towards the midline, then the jump would have been successful. Once again there is substitution. Ajay Dhaka goes out and Dharamveer Singh comes in, and for the Periyar Panthers it is Ankit Surendra who comes in. Okay. So this you were talking about how do we tackle Ashish Narwal. Okay, let me just try and give some sort of small tips, because I'm sure nothing will work against him when he is in such prime form. The simple basics is ask him to earn his point. That's all. Look at that. Right cover, right corner, both of them playing high line defense. That is the place where he gets his point. Simple. Ask him to get his points means you do not go on a high line defense against him. Rahul Chaudhary BN at right cover should understand that. Against Pratik Dhaya and against Ashish Narwal, they are the raiders who will be definitely hungry for more points.
and that is what even used to happen with Rahul Chaudhary. And 2 points here for Ramesh Chaudhary once again. Oh, in fact, there is Dharamveer Singh, who's come in and taken 2 important points and taking away Naveen Sharma out of the game. Yeah, so even with Rahul Chaudhary, we've seen that. Okay, he always will be hungry for points, and when you do not give him points, he used to try different things. Those are the things that I haven't seen Ashish Narwal do. I have seen Partik Daya be under that pressure, and once again see highline defense. As I'm talking, it's the same error. Harshit, it's the same error. बिल्कुल, और सेम डिफेंडर शायद फिर से वहां पर मौजूद है, राहुल चौधरी। और जिस तरह से आपने कहा कि आप उन्हें पॉइंट मत दीजिए, कल हमने प्रतीक दहिया को भी देखा कि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा करने का प्रयास करने दीजिए। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छा किया, एक्स्ट्रा में उन्होंने अपनी टीम के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर परफॉर्मेंस दिया, वो बहुत ही लाजवाब था। और आशीष नरवाल के पास नवीन देखिए कुछ एक्स्ट्रा एजिलिटीज मौजूद है, जिस तरह से स्ट्रेच भी बहुत अच्छा करते हैं, इसलिए आपको और भी ज्यादा वहां पर आश्चर्यजनक रहना पड़ेगा, आपको चकित रहना होगा कि आप इस तरह से उन्हें पॉइंट्स न दें, उन्हें मशक्कत करने दें। I want someone to be very strong, like the great Indian all-rounder Sandeep Narwal, who is a very, very good raider, who's also a very good defender. So when you look at that from the right corner, that time the angle worked out very, very well to pin down Ashish Narwal. This is what I was trying to say. The right in becomes a very important place, but this time the angle was perfectly right in front of Ashish Narwal, and what a strong tie hold that was by Vinod Chaudhary to put down Ashish Narwal. See, there are few tactics, there are few techniques to keep Ashish Narwal down, but only thing is it has to pay off, it has to pay well. Once again Dharamveer Singh takes it upon Naveen Sharma and gets 2 points. इस बार भी ब्लॉक के लिए जाना चाहते थे, परंतु बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर चेन की तरफ से टर्न लेने का प्रयास नहीं किया धर्मवीर ने। जानते थे कि वहां पर चेन मौजूद है, इसलिए अपने लेफ्ट की तरफ वहां पर उन्होंने टर्न लिया और बहुत ही सही तरीके से यहाँ पर नवीन शर्मा और साथ ही साथ एक और खिलाड़ी को अपना शिकार बनाया। और आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि कुछ तकनीकी तौर पर वहां पर जरूर आशीष नरवाल को आप आसानी के साथ डिफेंड कर सकते हैं। जिस तरह से पिछला जो टैकल था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि आशीष नरवाल की जरूर जिस तरह से उन्हें जंप लगाकर मिड लाइन की तरफ जा रहे थे, फोर्स उनका उस तरफ था, तो यहाँ पर विनोद चौधरी की सच में तारीफ करनी होगी जिस तरह से उन्होंने आशीष नरवाल को टैकल किया था। नवीन, yeah, and now Periyar Panthers have left only with 3 men on court, and this should be the opportunity for Ramesh Chaudhary and Dharamveer Singh. They have started to get some points. They should go in and they should clean this up. They should put that fast straight. Very, very important. You can't take your time. The defense will settle down. In a super tackle situation, you will have to go and unsettle the defense. Come on, inflict that all out. Get those lead points coming down for the Periyar Panthers, and that did not happen. Rinku will once again come. This will be the second consecutive raid, and if he goes back empty-handed, it will be interesting. He will not. Just watch out on that left cover and left corner. Look how high line defense they are playing, and look at that. The backtracking skills not there at all, and then right in comes in with a surprise. So this is what has to happen for Ashish Narwal as well. When he is coming running towards you for the running hand touch, instead of going back, get a person like Ankit in your team. Train a person for a special person. Train a special defender for the ankle holds that is coming in from the right in position. Very, very important. And another touch point. That is nice from Ramesh Chaudhary. तो अच्छा लग रहा है जिस तरह से यहाँ पर मराठा मावल धीरे धीरे ही सही इस मुकाबले में वापसी की तरफ जाना चाह रहे। ये इंटेंट अच्छा है, ये इंटेंट सबसे बेहतरीन था। आप लगातार बात करते हैं कि आपके कोच हमेशा आपको कहा करते थे कि आप फ्री खेलिए, स्कोर बोर्ड पर ध्यान मत दीजिए, स्कोर कार्ड पर ध्यान मत दीजिए। और शायद मराठा मावल्स अब यही करना चाह रहे कि स्कोर कार्ड को हम ज्यादा ध्यान न दें। क्या बात है, वेरी क्लेवरली आशीष उम्मीद है तो वैसे लेफ्ट कवर के डिफेंडर, परंतु जिस तरह से उन्होंने क्लेवर यहाँ पर प्रदर्शन किया है। और नवीन, ये बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। मैं देखना चाहूंगा कि आने वाले समय में अगर हमें आंकड़ा मिले कि सबसे ज्यादा ऑल आउट से बचती हुई कौन सी टीम नजर आई है और सबसे ज्यादा सुपर टैकल किस टीम ने किए हैं। All out being saved. That's a big data that you're wanting in for. And now the all out finally comes in.
with Ramesh Chaudhary taking away those 2 points. This is very, very important. We can keep the count of the all out, but somewhere if we can even get the even the super tackle situations, of course, that will also give how many times the team has saved itself from the all out. That's also a very interesting stat. But more importantly, मैं शुरुआत से उमंग नहीं करना चाहता हूँ, पर अब यहाँ से जिस तरह से मैं देखना चाहता हूँ कि आने वाला जब चैलेंजर राउंड आएगा तो जिस तरह से हम भी अगर उससे ध्यान में रखने कि आप जिस तरह से कहते हैं कि लगातार एक एक परिस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और इस बार एंकल होल्ड है. That is nice. That's really nice. Ashish Malik once again. See, there are few errors even in the topmost raider. The ankle hold is a very, very big weapon because he gets that little bit of time. See, I'll tell you something. Ashish Narwal has not got a very swift toe touch. He's not got a toe touch. He does not sit. Even with Partik Daya, tall raiders, because I understand the problem of tall people. So let me take Ashish Narwal's side there. We can't sit immediately and get up quickly. And for the toe touch, you want that one leg squat, which is really important. So the one leg squat does not come in from Ashish Narwal. So ankle hold on the left corner and right in surprise double thigh hold or a double ankle hold is a very, very good weaponry against Ashish Narwal. But Ramesh Chaudhary has been pinned down with a proper cover defense of Anish. With the chain, covers doing it really easily and coming across. Look at that, cutting the angle, and even he could not turn because they were holding his left shoulder. And that's why he could not turn against the chain's angle. जी हाँ, आशीष और अनिश वहां पर मौजूद थे. आशीष उमेद और अनिश का एक बहुत अच्छा प्रदर्शन और इस बार नितिन जागलान ये कवर्स की लगातार यहाँ पर राहुल चौधरी को फिर से शिकार बनाया है. देखिए नवीन, देखिए दो राहुल चौधरी कवर पर वहां पर मौजूद है तो एक फायदा, स्लाइट फायदा हमारे लिए है कि चाहे कोई सा भी जर्सी नंबर हो, हमें पता है कि राहुल चौधरी आउट हुए हैं. No, that time it was Rahul Chaudhary BL with 13 on his back. Yeah, see what happens. Again, covers. Why play high-line defense? You know that you are lagging behind. With a diving ankle hold, now Dharamveer Singh has to go back on the bench, and Ankit Surinder says, okay, I started off as a right corner, but in the left corner also, I will show my skills, and that is what he did. Brilliant double ankle hold by Ankit Surinder. And now let's see what happens in the team of 4. See now what Ashish Narwal very cleverly does, he will speed up his raid. He will speed up his raid the moment there are 4 or 5 defenders. He will not raid so swiftly when there are 6 or 7 defenders. Look at the speed. Look at the speed. And that is nice to see. A single thigh hold. Brilliantly put up by Vinod Chaudhary. I'm sure he's not hurt himself, thankfully. Yeah, we are all going against Ashish Narwal, but in the nick of the time, he should also be careful of his knees. Yeah, see where Vinod Chaudhary did not go back. He attacked Ashish Narwal. He did not expect that attack at all because he's always seen defenders running away from him. You know, trying to escape from him, trying to retrieve out from the defensive position. That is nice. ये बहुत अच्छा लगा देखकर जिस तरह से विनोद चौधरी ने, और देखिए जिस तरह से हमने दीपेश की बात की, विनोद चौधरी की बात की, लगातार शिकार यहाँ पर आशीष नरवाल को बना रहे हैं. ये प्रदर्शन देखकर मराठा माहौल से आप खुश होते हैं. वहां पर ये जरूर ऐसा प्रदर्शन, ऐसी वो लड़ाई का आप में एक जज्बा होना चाहिए. देखिए जोश, जज्बा और जुनून 3 शब्द हैं, हम उन्हें का लगातार यहाँ पर प्रयोग करते हैं, परंतु तीनों ही शब्दों में बहुत महत्वता है नवीन. देखिए जोश और जज्बा, जिस तरह का जज्बा यहाँ पर विनोद चौधरी और दीपेश में देखने को मिला है आशीष नरवाल के विरुद्ध, इस बार जरूर रिंकू बहुत ज्यादा यहाँ पर अंदर जाकर क्या एक टच पॉइंट लाने का प्रयास करेंगे विनोद चौधरी. और दीपेश ने अपना हाईफाई जो बनाया है, मुझे उसमें से 4 बार याद है. Yeah, just watch out Vinod Chaudhary. Yeah, absolutely. But just watch out in that raid what Vinod Chaudhary was doing wrong. See, when you go down, why do you have to have your chain? Why do you have to have your chain? It's a simple basic kabaddi skill. And look at this. This is nice. Look at Ankit Surinder. And the dash. He was completely blinded off. Ashish Umed sneezed that opportunity off. And he said, okay, let me push himself and make sure he get a point. Look at that. Very easily done. And I was just trying to show you what Vinod Chaudhary does. Watch him out once again. Number 12 jersey on the right corner.
the attack will come to him for sure. You are the one who are controlling the chain because you have your hand up on Rahul Chaudhary BN. And when you go back, okay, that's nice. That's a nice swingy moment. And when you have to go for the double tie hold, you cannot do it from in front of the box line. That too against Ashish Narwal. The idea was right. The place was wrong. या बिल्कुल आपने सही कहा कि आइडिया वहाँ पर सही था। और नवीन देखिए, ये भी मेरा एक पॉइंट मेरे दिमाग में आया कि जब जिस तरह से अभी यहाँ पर जब डबल थाई होल्ड करने का प्रयास किया, तो जब वहाँ से लेफ्ट कॉर्नर और रेडर के बीच का डिस्टेंस था वो बहुत ज़्यादा था। और पिछली बार जब इन्होंने वहाँ पर टैकल किया था विनोद चौधरी ने आशीष नरवाल को, तो लेफ्ट कॉर्नर उनके बाजू में था। तो क्या इसका भी ध्यान थोड़ा सा डिफेंडर को देना होता है कि जब थोड़ा आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलने की यहाँ पर परसेंटेज हो। रमेश की मैं बात कर रहा था, इनका शानदार हाई फाई रहा है और छठा टैकल पॉइंट उन्होंने लिया है। और नवीन में शायद अगर गलत नहीं हूं तो इन्होंने लगभग 4 से 5 बार आशीष नरवाल को एंकल होल्ड किए हैं। एक बार वेस्ट होल्ड किया था और लगातार दीपेश कुमार ने यहां पर बाकी डिफेंडर्स के लिए कह दिया है कि इस तरह से आप आशीष नरवाल के विरुद्ध प्रदर्शन कर सकते हैं। This is the problem. This is the problem that is Ashish Narwal's weakness, I should say. You know, I'm sorry I'm pinpointing this to other defenders, but somewhere you will have to have an equilibrium. You will have to have a balance. Ashish Narwal has become too much for any defender to contain with. But once again, that left corner ankle hold is his weakness because he's not got a swift toe touch. And even if he goes to the bonus, he's got that turning bonus. He turns his body towards midline and then tries to keep his right leg behind the bonus line and tries to go away towards the midline in a momentary position to run away from the defender. Ankle hold is the biggest weapon against Ashish Narwal, and today, definitely, as you said, Deepesh Kumar has shown it to the world. और उसके लिए बिल्कुल आपने जिस तरह से शुरुआत में बात की थी कि आपको खासकर कवर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कवर्स पे वो टच पॉइंट लाना बहुत पसंद करते हैं। तो कवर्स अगर उन्हें शुरुआती समय में पॉइंट न दे नवीन, तो उसके बाद आशीष नरवाल को डीप जाना पड़ेगा। और जब वो राइट रेड करते हैं लेफ्ट कॉर्नर के पास बहुत अच्छा मौका मिलता है। ये देखिए आशीष नरवाल ने 16 रेड पॉइंट्स लिए हैं। Yeah, even in those 16 rate points, see what he's done. He's not got any toe touches. He just goes, presses the defender down. And that's all he does. So, when there is a, look at that, he presses the defender and then there is an attack on the right cover. And when the defender does not have the proper hold of his ankle, he just escapes. So, pressing the defender is his skill, not toe touch. So, you'll have to be very, very clear when you will go for that ankle hold. And today, Deepesh Kumar has got Ashish Narwal 4 times out of 6. So, make it a double high five for me. Make it a double high five from my end to Deepesh Kumar. Do what I did! And he gets a point. देखिए आशीष नरवाल ने जरूर अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में वापसी की है। नवीन थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से यहाँ पर हाफ हर्टेड टैकल के लिए जाना चाहते थे। पिछला जब इनका मुकाबला था मराठा मार्वल्स के विरुद्ध, तब इन्होंने 9 टैकल पॉइंट्स लिए थे जब रेगुलर खेल रहे थे। और ये रेगुलरिटी का भी फर्क पड़ता है कि हमने आशीष नरवाल कुछ खिलाड़ी बड़ी आसानी के साथ मुकाबले में कुछ समय बाद वापसी कर लेते हैं। इस बार नंबर 5 जर्सी दे राहुल चौधरी, और राहुल चौधरी के लिए दिन इतना बेहतर नहीं गया है। एक बार पुनः Yeah, Rahul Chaudhary BL got that rate point, and Rahul Chaudhary BN gave away that point and revived, I guess, Navin Sharma back on the court. No, oh, it's Ashish Narwal there in the right corner. So come on, somewhere Ramesh Chaudhary should seize this opportunity, go in for the big running hand touch. I guess it's Dharamveer Singh, correction, yeah. Dharamveer Singh should go for the big running hand touch on Ashish Narwal. He will not be confident in defending. Come on, these are the small things now, Harshit. These are the small things that makes you from a super lad to a superstar of kabaddi. Yes, absolutely. और देखिए क्योंकि कुछ खोने के लिए ज्यादा था भी नहीं, ऐसी परिस्थिति आती, परंतु इस बार लीजिए नवीन, ये क्या टोटल दर्शाया है। और बिल्कुल यहाँ पर दीपेश को शायद देखना होगा, एक बार फिर से हम रिप्ले में जरूर ध्यान देंगे। कहाँ से? there you go. He's answering me. I like this. I like the competition. Yeah, the toe touch coming in, but also a half-hearted one. I won't say that's the swiftest toe touch by any raider, but it's nice. It's nice that Ashish Narwal is thinking of toe touches. I guess
out of those 200 plus points, I guess only 10 would have come from a toe touch, and that was one amongst them. It's not even 2%. It's not even 2% of toe touches that he's got. And Dipesh Kumar did not see it coming. और इस There, बार भी there. देखिए, ये कार्य करना वो पसंद करते हैं कि प्रेस करते हैं वहां पर, जिस तरह से आपने बताया कि प्रेस करते हैं अपने आप से दूर डिफेंडर को। इस बार भी जानते थे कि उनके लेग्स पर आने वाले, तो सिर्फ उनके कंधे का इस्तेमाल किया, फोर्स और आउटवर्ड्स लिया, बड़ी आसानी के साथ मिड लाइन को क्रॉस किया। अब मराठा मावल्स एक बार फिर से ऑल आउट की यहाँ पर दहलीज पर खड़ी। परंतु नवीन, जिस तरह से शुरुआत में लग रहा था कि ज्यादा ऑल आउट होती मराठा मावल्स नजर आ रही है, तारीफ करनी होगी जिस तरह से इतनी आसानी के साथ पेरियार पैंथर्स को मुकाबला जरूर ऑल आउट करने के लिए ज्यादा मौका नहीं दिया है। Yeah. And Rahul Chaudhary DL in the do-or-die race. Come on, last 10 seconds. He is under pressure. He can go for the bonus. Not a tall raider though. Has he got it? He's gone out of the court though. But yeah, they will discuss about it. The raider is out of the court is what the discussion was. But let me see if we can get a touch point. Went in deep. I did not see Nitin Jaglan react to that. I guess Naveen Sharma is coming out. No, it's not Naveen Sharma. It's Nitin Jaglan that he actually went in for the running hand touch in the deep. It was not. Oh, each 1 point. Each 1 point. Okay. Right. The hand touch was there. And also the raider going outside the lobby. Look at that. It was actually Nitin Jaglan. It was not at all Naveen Sharma. Okay. Right. Whatever. That's 1 point each. Now look at his speed. When only 3 defenders are on court, he does not minimize the speed and keeps his legs away. This is the skill that some defender has to counter attack. Why do you have to go for that? Why do you have to go for that? He is not coming towards you. He won't come and touch you. Why do you see? I want to see where Ashish Narwal hails from. Okay, because I'm sure in his village every elder would have taught him. The moment when you go to touch their feet, they'll say, "Arey beta nahi, rendo, pair mat pado." That is the tactic that he uses always against defenders. बिल्कुल आपने सही तरह से इसे को रिलेट कराया कि जिस तरह से भारत में एक ही परंपरा है और बड़ी खूबसूरत परंपरा है कि जिस तरह से आप बड़ों के पैर छूते हैं और बड़े देखिए इस बार भी ऐसे ही नजर आएंगे। Something different now. पर चलिए इस तरह की आप जिस तरह से रिलेट किया इस बार ही देखना होगा, इस तरह से टर्न किया और यही इनमें क्विकनेस है, जिस तरह से अपनी हर एक स्किल्स को देखिए। नवीन, मैं ये मानता हूं कि जिस तरह से क्रिकेट में भी कहा जाता है कि आपके पास शॉट्स भले ही बहुत सारे हों, परंतु सही समय पर सही शॉट का चयन करना इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरह से कबड्डी में रेडर्स हो या डिफेंडर्स हो, आप में स्किल्स बहुत सारी है, परंतु सही समय पर सही स्किल का चयन करना और उसे एग्जीक्यूट करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। Yeah, that's the end of the game, and Maratha Marvels will feel that somewhere they have made a comeback in the second half, because it is only 10 points in the Maratha Marvels. And Harshit, can you believe this? I told the Maratha Marvels should probably follow on because there was a 21-point deficit in the first half, and they've exactly scored 21 in the second half. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, अभी भी 21 का वहां पर फर्क है और अच्छी तरह से फॉलो किया। वैसे देखिए जिस तरह से यहाँ पर यानी कि बराबरी पर, ये अच्छे संकेत है मराठा मावल्स के लिए। एक मानसिक जीत आप मान सकते हैं सेकंड हाफ में, जरूर आंकड़ों में जरूर वहां पर आपको जीत नजर नहीं आएगी, परंतु सेकंड हाफ में बराबरी का कॉन्टेस्ट वहां पर दिया है। और क्यों दिया है? क्योंकि लगातार कॉर्नर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है। रेडर से थोड़ा सा और आप बेहतर देखना चाहते थे और यहाँ पर आपको कुछ आशीष नरवाल के पॉइंट्स नजर आएंगे, उसके बाद कुछ डिफेंसेस में भी नजर आएगी आशीष नरवाल। और यहाँ पर धर्मवीर लगातार कुछ मल्टीपल रेड पॉइंट्स लेकर गए थे अपनी टीम के लिए। And let me tell you a breaking news. What has happened is the biggest rhino and the biggest panther are fighting it out for the top position here in the Yuva Kabaddi Series. And can you believe, Harshit? Only 1 point separates them. Ashish Narwal is just 1 point behind Pratik Daya. And that is even after not playing 3 games. Even after not playing 3 games, Pratik Daya playing continuously. And Ashish Narwal is just 1 point behind. And he showed me that he has a toe touch. But that was not a very, very swift toe touch. But he has it in his harmony. And I think before rather answering me, he wouldn't have even tried that toe touch on Dipesh Kumar. I guess the toe touch came in as an answer.
to what I was actually pointing it out at. So the raid points is enough for Maratha Marvels' overall score for Periyar Panthers to go ahead and have this big victory. बिल्कुल, और 3 ऑल आउट वहां पर करते हुए नजर आए थे। और देखिए पेरियार पैंथर्स को भी वहां पे मुकाबला जीतने के बावजूद यहां पर दूसरे पायदान पर मौजूद होगी, क्योंकि मुरथल मैग्नेट्स महज एक मुकाबला हारा है। पेरियार पैंथर्स लगातार 2 मुकाबले हारा था। और वहीं पर अगर हम बात करें तो एक बार फिर से मराठा मार्वल्स के लिए 11 हार और महज 1 जीत। नवीन, Absolutely. And then the next game is really important for Panchala Pride, because the Humpy Heroes are somewhere above in those points tables, and then the Panchala Pride will have to make a comeback, and this is interesting. So this was the 12 noon game, and I was Navin Shorey, and along with me was Harshit Sharma, as always. Very enthralling to have a proper discussion with you here, Harshit, on Pancode Live. But see you soon at 6 p.m. today, and let the Sunday be a spectacular one this evening. Thank you so much, everybody, on Pancode. This is Navin Shorey signing off along with Harshit Sharma.